देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। द टर्म pH refer to the measurement of days ion activity in the solutions. The term pH refer to the measurement of days ion activity in the solutions. Question answer है hydrogen ions. The term pH refer to the measurement of hydrogen ions activity in the solution. pH refer करता है measurement of hydrogen ions की activity को solution में. The term pH refer to the measurement of hydrogen ions H plus activity in the solutions. It indicates the acidity or basicity of liquid solutions. It indicates the acidity or basicity of liquid solutions को indicate करता है. अब with a pH value ranging from 0 to 14, a pH of 7 is a neutral, while values below 7 are acidic and values above 7 are alkalines. बेसिक जिसे बोलते हैं. तो और देख लेते हैं. The term pH refer to the measurement of hydrogen ions as activity in a solutions. It indicates the acidity or basicity of a liquid solutions with a pH value ranging from 0 to 14. A pH value 7 is a neutral and the pH values below 7 are acidic and above 7 are alkalines. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक. इसका आंसर है स्टील फेस शील्ड. स्टील फेस शील्ड कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कंसिस्ट ऑफ अ माइल्ड स्टील फ्रेम with a blade made of high carbon or a high speed steel secured inside the frame and tightened using a flange nut. इसका आंसर है हैक्सॉ होती है. हैक्सॉ टूल कंसिस्ट ऑफ अ माइल्ड स्टील फ्रेम. हैक्सॉ इज द कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्रेम with a blade made of high carbon और हाई स्पीड स्टील secured inside the frame, जो कि secured होती है inside frame में, and tightened using a flange nut. That is the hacksaw होती है. A hacksaw is a tool that consists of a mild steel frame. Mild steel frame में hacksaw होती है with a blade made of high carbon or a high speed steel. With a blade made of high carbon or high speed steels secured inside the frame and tightened using a flange nut. जो कि मतलब एक प्रकार से बहुत ही टाइट नट से बंधी हुई होती है, फ्लैंज नट से, और माइल्ड स्टील का फ्रेम होता है. उसका हाई कार्बन होती है और हाई स्पीड स्टील होती है. Hacksaw is the tools that consist of mild steel frames with a blade made of high carbon or high speed steel secured inside the frame and tightened using a flange nut. Hacksaw is a tool that consists of a mild steel frame with a blade made of high carbon or high speed steel secured inside the frame and tightened using a flange nut. Explanations इसका. फ्रेम किसका बना होता है. द मेन पार्ट ऑफ द हैक्सॉ इज द फ्रेम. द मेन पार्ट ऑफ द हैक्सॉ द फ्रेम टाइपिकली मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील और ड्यूरेबिलिटी. फ्रेम इज द मेन पार्ट ऑफ द हैक्सॉ ऑफ द फ्रेम टाइपिकली मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील फॉर ड्यूरेबिलिटी. ब्लेड किसकी बनी होती है. The cutting part of hacksaw made from high carbon or a high speed steel made from high carbon or high speed steels for its sharpness and ability to cut through metal efficiently.
The cutting part of the hacksaw made from high carbon or high speed steels for its sharpness and the ability to cut through metal efficiently. Flange nut. Flange nut क्या होता है? A screw mechanism. A screw mechanism that holds the blade. A screw mechanism that holds the blade securely within the frame. Secure within the frames. That is the flange nut. See key points. Key points about hacksaw. Used for cutting metal. Used for cutting metal. Hacksaw are primarily used to cut metal rod, bar, pipes, and other flat materials. Hacksaw are primarily used to cut metal rods, bars, pipes, and other flat materials. Different blades types. different blade types इसमें यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीइंग कट, जो कि डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हमको काटना है उस पर. डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीइंग कट, different blades type with varying teeth patterns are available. Different blades type with varying teeth patterns are available. Key points है adjustable frames. Some hacksaw have adjustable frames to accommodate different blade length. Some hacksaw have adjustable frames. Adjustable frames होता है जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेड की आवश्यकता के अनुसार उसको हम बड़ा छोटा कर लें. Accommodate different blade lengths. Question number 4 है हमारा. What can be defined as a continuous helical ridge on the nut inner part or screw outer part of the cylinder? What can be defined as a continuous helical ridge on a nut inner part or screw outer part of a cylinder? Answer is the threads. That is a thread. Thread can be defined as a continuous helical ridge. Thread can be defined as a continuous helical ridge on a nut inner part or screw outer part. Screw के outer part में होता है of a cylinder. Outer part of a cylinder. That is a thread. क्योंकि जो नट बोल्ट होता है उसमें एक थ्रेडिंग बनी होती है, वो कंटिन्यूस रिज होती है, उसको रिज बोला जाता है. हेलिकल रिज होती है ऑन अ नट इनर पार्ट और स्क्रू आउटर पार्ट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, दैट इज अ थ्रेड. अ थ्रेड रेफर टू अ कंटिन्यूस हेलिकल रिज. द हेलिकल रिज कम विद अ यूनिफॉर्म सेक्शंस ऑन अ डिफरेंट सरफेस ऑफ अ सिलेंडर और कॉन. इट कैन form on the nut internal or the screw bolt external surface. Question number 5 हमारा. Which of the following is the process of joining two metallic pieces by compressing an auxiliary joining component? Which of the following is the process of joining of two metallic pieces by compressing an auxiliary joining components? That is the riveting. रिवेटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि दो कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइंट किया जाता है ऑक्सिलरी प्रोसेस से, जिसमें उनको आपस में एक दूसरे पर दबाव डालकर प्रेस लगाकर उसको आपस में ज्वाइंट किया जाता है. दैट इज द कॉल्ड रिवेटिंग प्रोसेस. The process of joining two metallic pieces by compressing an auxiliary joining component is called riveting. Riveting is a process of joining two metallic pieces by compressing an auxiliary joining component is called riveting. Explanation is that riveting involves inserting a solid metal fastener होते हैं बांधने वाला, the rivets, into a hole drilled through two pieces of metal to be joined. The rivet is then compressed
compress, expanding, securing the piece together. This creates a strong mechanical joint. Riveting involves inserting a solid metal fastener the rivets into a hard drill called two pieces of metal to be joined. The rivet is then compressed. The rivet is then compressed, expanding and securing the piece together. This creates a strong mechanical joint. About rivetings, no melting involved. Unlike welding or brazing, riveting does not require melting the base metals. Auxiliary components. The rivet is the auxiliary joining components. Rivet is the auxiliary joining component that is compressed to create the joint. Applications. Riveting is commonly used in situations where high strength and durability are needed, especially in applications with exposed joint.